Hello children, you must be thinking how to revise topics which are related to chemistry and you find it difficult. Well, we have got an easy solution for the same. Today I am going to give you a one-shot revision for acid, bases and salts. Yes, क्लास 7th का ये चैप्टर है जिसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मुश्किल है, पर आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ही मुश्किलें आसान करनी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो पहले ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है क्या? तो जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, थिंग्स दैट आर अराउंड अस कैन बी कैटेगराइज्ड एज ईदर एसिड, बेस और न्यूट्रल, राइट? तो अगर हम बहुत ही लेमन टर्म में बोलें तो जो चीजें हमें खट्टी लगती हैं वो मोस्टली एसिडिक होती हैं और जो बिटर होती हैं वो बेस होती हैं। लेकिन क्या इतना जानना काफी है? नहीं। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस चैप्टर। नाउ, what are acids and what are their speciality? Let's find that out. Acids that we know mostly are hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, the king of acids, also known by their formula HCl, H2SO4, right? And nitric acid is also a strong acid. So we know these acids, but these are all mostly found in your labs, right? There are certain acids like citric acid, carbonic acids, which are natural acids and you find them in your kitchen most of the time. But what are acids? We need to know them in detail, right? So acid is sour in taste. Yes, खट्टे होते हैं acid. पर हम हर एसिड को टेस्ट करके तो नहीं बता सकते ना कि वो एसिडिक है या नहीं, right? Acid, the word acid comes from the Latin word acre, which means sour, right? So ये word Latin word से लिया गया जिसका मतलब ही होता है खट्टा या sour, right? So let's see where we find them. We find them in curd, lemon juice, orange juice and vinegar. Yes, these are things that you commonly see in your kitchen. The chemical nature of these substances is acidic and it is corrosive, right? अगर आपको corrosive नहीं समझ में आ रहा तो ये समझिए कि ये harmful है, right? And later you will know in higher standards when you reach in 10th you will know more about the chemical reactions that these acids do in our daily life and how they react with various objects. Now acids are sour in taste and they might be corrosive. As I said, corrosive अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, you can just understand that they are harmful, right? And they can turn blue litmus red. इसे हम बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे आगे जाके, but अभी ये समझिए कि अगर आपको जानना है कि कोई ऑब्जेक्ट एसिडिक है या नहीं, कोई सब्सटेंस एसिडिक है या नहीं, तो आप लिटमस पेपर उसमें डाल सकते हैं और लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाएगा। सो इन आवर डेली लाइफ मैंने आपको इतनी बार बोला कि हाँ एसिड्स, ये कॉमन एसिड्स हैं, आपके किचन में अवेलेबल है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर व्हिच एसिड्स आर फाउंड in the substances or the vegetables that you eat on a daily basis. In vinegar, which is used in most of the food item, you know, maybe your noodles and other food item that your mom is preparing for you, vinegar contains acetic acid. Ant bite. If an ant is biting you or stinging you, then it is inserting formic acid in our body. Citrus fruits, orange, lemon, yummy, we all love them, right? So all these citrus fruits have citric acid, a very common acid called citric acid. Curd. हम सभी को रायता पसंद है. Curd has lactic acid. Spinach has oxalic acid. Avla has absorbic acid. And tamarind
has tartaric acids. So these are few acids that you find in commonly found fruits and vegetables and is commonly asked in your exams. Now what are bases? The bitter tasting substance. The bitter tasting substance which are also soapy in touch. You know, most of your detergents, your soap are basic in nature. तो अगर आपने गलती से बेस को मुंह में लिया, साबुन कभी ना कभी तो मुंह में गया होगा. So these are all bitter in taste. But like I said, you can't taste everything to find out whether it is acidic or basic because both of them are corrosive. They are very dangerous if ingested. I'm not saying all of them are, like you can taste lemon, but then you cannot taste hydrochloric acid. Similarly, even bases are corrosive. So you can't taste them every time to find out if a substance is acidic or basic. खट्टा है तो acidic, bitter है तो basic. कुछ exceptions भी हैं जिसके बारे में हम कभी और पढ़ेंगे. Right? So a bitter tasting substance which feels soapy and is soapy in touch is known as bases, mostly found in your cleaning substances, right? And baking soda, floor cleaner, window cleaner, all of them have bases in them. Baking soda is a base, sodium hydroxide is a base, lime water is a base, magnesium hydroxide or milk of magnesia is also base. Now let's see, like we have read about common, acids that are found in your kitchen. Let's find what are the bases present in some common substances. The lime water. Lime water is not नींबू पानी बच्चों, ये lime water is calcium hydroxide. ठीक है, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये पॉपुलर बेस है और उनके कॉमन साइंटिफिक नेम्स हैं. ठीक है, विंडो क्लीनर में हमें क्या मिलता है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड. सोप में क्या मिलता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड. और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप सोच रहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों इतना पॉपुलर है? तो कभी तो आपने घर में सुना होगा मम्मी को बोलते हुए, ओह एसिडिटी हो गई, इंडाइजेशन हो गया, आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल. इन दैट सिचुएशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज वेरी यूजफुल एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज magnesium hydroxide. Now, are all substances acidic or basic? No. There are certain substances which are neutral in nature as well. These are neutral in nature, that means they are neither acidic nor basic. So we have certain substances like distilled water, common salt, sugar solution, they are considered to be nearly neutral. They can't be considered to be acidic or basic. Right? Now, as I told you, we cannot taste every substance to find out if it is acidic or basic. Then how do we find out? We will find them out through indicators. Indicators are chemical substances that would change color to tell you if the given substance in which you have dipped an indicator is acidic or basic. Right? So, it's easy method. Using an indicator will give you a change in color and you can easily find out if the substance is acidic or basic. Let's look at them. Now, the indicator can be of two types. It can be natural or synthetic, but let's understand more about it. Acid-base indicator. Indicators are known as acid-base indicators, a substance that can be used to test whether a substance is an acid or a base. अगर आप उसको एसिड में या बेस में डालते हैं तो आपको कलर चेंज से पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है. Acid-base indicators react with acids and bases to produce a different color in each. Now, yes, but in future, in your higher standards, especially in 10th, you will understand that there are indicators that just not work only on color indications. They work on smell, change in smell as well, and they are known as olfactory indicators. But we will study them in higher classes.
So we have acid-base indicators which give us different color in each acid or base. Some are natural while others are artificially made. Some are natural and others are artificially made, or we call them synthetic indicator. Natural indicators can be as simple as turmeric, China rose, right? And you have many that are found in your laboratories, which are methyl orange and other such indicators. Look at these common indicators. Litmus, a very famous indicator. I am sure all of you must have heard about it. It's a natural indicator. It's a lichen. It is usually purple in color when naturally obtained, and later it is turned into a paper-like structure and given various colors like red and blue. Turmeric, हल्दी, हर घर में यूज करते हैं. इंडियन घरों में तो बहुत आसानी से टर्मरिक मिल जाता है. Hibiscus flower petals or extracts. This is a common flower that we find in our gardens, and this also works as a natural indicator. Flowers of hydrangea, red cabbage extracts. Red cabbage is also nowadays commonly available and acts as a natural indicator. Now, what are natural indicators? They are made from natural substances. You will find that these are all made from natural substances and nature is playing its role in it. China rose extract, turmeric, litmus paper, etc. Now, as I told you, litmus paper is one of the most famous indicators and children usually find them in their school labs as well, right? So, it is a non-naturally obtained purplish lichen and it can be turned into a paper. This paper will be dyed in various colors. A blue litmus paper and a red litmus paper are commonly used, right? Blue litmus paper will turn red due to acids and red litmus paper will turn blue because of bases. China rose is also a naturally obtained indicator which gives color change in both acid and bases. Turmeric, मम्मी खाना बना रही हैं, उनके कपड़ों पर हल्दी लग गई, या आप खाना खा रहे हैं और आपने अपने शर्ट पे गिरा ली और उस पर हल्दी गिरती ही गिरती है, या कोई और ऑयल एसिडिक चीज गिरती ही गिरती है, राइट? हल्दी नहीं, अगर आपने कुछ खाया और उसका स्टेन लग गया, मम्मी जब साबुन लगाती है तो क्या होता है? साबुन लगाने से टर्मरिक जो है बेस में रेड कलर देता है. You can do this experiment at home. You can, take some turmeric powder, right, and apply it on a piece of cloth and then wash it with a soap. Soap has base and it turns it reddish in color. Turmeric and acid will always result yellowish in color, that is nearly no change in color, and neutral में भी yellow color ही रहता है turmeric. तो acid में yellow ही रहेगा, neutral वाले solution में भी yellow रहेगा, लेकिन base में ये red हो जाएगा. So are there other indicators? There are artificial indicators which are also very, very useful and most commonly found in your school labs. The two most famous indicators are phenolphthalein and methyl orange. Phenolphthalein and methyl orange, इनके एक दो बूंद ही काफ़ी हैं आपको बताने के लिए कि दी गई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक. जैसे फिनोफ्थलीन जो है ये कलरलेस है, लेकिन एसिड में ये कलरलेस ही रहेगी और बेस में ये पिंक हो जाती है. देखिए बेस में कितना प्यारा पिंक कलर आता है अगर आपने ये इंडिकेटर डाला तो. अब मिथाइल ऑरेंज, नाम से ही पता चल रहा है, इट्स अ वेरी कलरफुल इंडिकेटर एंड इट रिमेन्स रेड इन एसिड्स. In a neutral solution it remains orange and in bases it turns yellow. तो ये कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि चीजें एसिडिक है या बेसिक, और
ये कलर चेंज आपके स्कूल के क्वेश्चंस में भी बहुत कॉमनली पूछे जा सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी मिक्स एसिड एंड बेस? अगर हमने एसिड और बेस को मिलाया तो हम उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो हम उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एसिड एंड बेसिस आर मिक्स्ड and I would say they kind of cancel each other's property or destroy each other's property, resulting in salt and water. So neutralization reaction is when you mix acid and base to give what is salt, and water is also produced along with it. So acid plus base gives you salt plus water, and this is known as neutralization reaction. Let's have a look at it. जब हम एसिड और बेसिस को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, और फर्स्ट नेम ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम द बेस। आपको लग रहा होगा मैम क्या बोल रही है, तो आप जो कॉमन सॉल्ट खाते हैं उसका नाम पता करिए। उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, राइट? जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं दैट इज NaCl. NaCl. How is it obtained? I'll tell you how. The base stands first and the component from the acid stands next, right? So first name base से आता है और second name comes from the acid. Let's find that out. अब ये देखिए, आपने HCl लिया जो एसिड है, आपने NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो बेस है, राइट? ये एक बेस है। इन दोनों के रिएक्शन से बन गया NaCl। नाउ Na बेस से आया है और इसीलिए हम इसमें नाम रखते हैं सोडियम। सो बेस का नाम पहले, बेस से लिया गया नाम पहले आता है, और क्लोरीन जो बाद में आया है और एसिड से आया है वो सेकंड प्लेस पे होता है, and it is sodium chloride. Sodium chloride. So acid plus base gives salt plus water, and heat भी evolve होता है. Yes, it is an exothermic reaction. So indicators का क्या रोल है पहचानने में? तो let's see. Acids, litmus paper blue to red turn हो जाता है, टर्मरिक पेस्ट में ये नो चेंज, चाइना रोज में डार्क पिंक और फिनोफ्थलीन में कलरलेस। ये जो चार्ट है अगर आप उसे याद रखें तो अच्छा है, और मैंने इसमें सॉल्ट्स भी इंक्लूड किया है बिकॉज सॉल्ट आप देखिए लिटमस पेपर में भी न्यूट्रल रहता है, टर्मरिक पेस्ट में भी न्यूट्रल रहता है, और चाइना रोज और फिनोफ्थलीन, यानी सॉल्ट एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट है, राइट? न्यूट्रलाइजेशन के प्रोडक्ट की वजह से ये आपको कोई कलर नहीं दे रहा है, कोई चेंज नहीं दे रहा है किसी भी इंडिकेटर में, राइट? लेकिन आपको ये बता दूं, जो आप 10th में और अच्छे से पढ़ेंगे, कि सारे सॉल्ट कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होते, राइट? कुछ कुछ सॉल्ट थोड़े से एसिडिक होते हैं और कुछ सॉल्ट थोड़े से बेसिक। एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या सॉल्ट का क्या वैल्यू है? हाँ, हम अपने खाने में तो इस्तेमाल करते हैं, बट व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ? इट कैन बी यूज्ड व्हेन वी हैव इंडाइजेशन, एंड स्टिंग, soil treatment, factory waste and tooth decay. So let's go through all of them one by one. सबसे पहले इंडाइजेशन, ये कॉमन है, मम्मी ने व्रत रखा है या पापा पार्टी से आए हैं एंड दे वुड ऑल कंप्लेन कि हमें इंडाइजेशन हो गया है, हमारी पेट में तकलीफ हो रहा है, आप कोई दवाई लाइए, राइट? सो दैट इज व्हाट यू हैव कॉमनली हर्ड, एंड अगर आपने भी सही टाइम से नहीं खाया या ओवर ईटिंग कर ली तो ये समस्या हो सकती है। Our stomach has acid which is known as the HCl. Yes, it is a mineral acid, but it is generally found in our stomach. ये हम सबके स्टमक में है to digest the food. ये आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी पढ़ा है, right? So this
जब ये ज्यादा हो जाता है, यानी when you have acid in stomach and indigestion is caused, it is quite painful. Then you take indigestion tablets or syrup which have magnesium hydroxide. Milk of magnesia is filled with magnesium hydroxide, which does neutralization reaction, and your stomach is a happy place again. Right children? So indigestion में milk of magnesia इस्तेमाल होता है. This is a very popular question in exams. Ant bite. अब ant bite में क्या होता है? हाँ, चींटी commonly घरों पर भी मिलती है और कभी कभी हमें काट भी लेती है, right? So when an ant bites, it injects acidic liquid which is formic acid into the skin, and it may be quite irritating. And yes, there are some ant bites which are even more I would say harmful, and it causes redness. So उस केस में हमें क्या करना चाहिए? We are supposed to use baking soda, that is sodium hydrogen carbonate, and calamine or calamine solution which has zinc carbonate. मतलब बेस का एप्लीकेशन करना चाहिए. फॉर्मिक एसिड एक एसिड है जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस का इस्तेमाल करना चाहिए. कॉमनली बेकिंग सोडा घर पे होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या यू कैन यूज कैलामाइन लोशंस दैट आर प्रेजेंट एट होम विच ऑल्सो हैज जिंक कार्बोनेट and is helpful in neutralizing the ant bite. Let's look at soil treatment. आप सोच रहे होंगे एसिड बेसिस सॉल्ट से हम फार्मर तक कैसे पहुंच गए? जी हाँ, फार्मर को भी अपने सॉइल को इंस्पेक्ट करना होता है. When they inspect the soil, they realize that because of plantation and for adding fertilizers, so many the kind of fertilizers that they have been using, the soil has turned acidic. अगर soil acidic है, then the plants will not grow properly. In that situation, if it is acidic, if it is too acidic, then you will use calcium hydroxide or slaked lime, quick lime, यानी आप bases use करेंगे. So farmer ये करते हैं. Farmer quick lime, slaked lime, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. They mix them in the soil, and after mixing them in the soil, they are trying to neutralize the soil for further plantation, right? लेकिन ये तो थी situation जब acidic हो जाती है चीजें. अगर basic हो गई तो if the soil turns too basic, even that is not good for the farmer, or I must say the plants, right? So when it is a lot of basic components are there in the soil, then we add organic matter or compost. This releases a little acidic components in the soil, thereby neutralizing the soil for further plantation. Now, factory waste is also a very important concern these days, right? We all know that factory के waste को नदी के पानी में mix कर दिया जाता है. अगर ये unavoidable है, तो at least the factory should ensure that the acidic output is first neutralized and then it is waste, or then it is mixed with the water in the rivers, and most of our popular rivers are facing this problem. तो factory owners को ये ध्यान रखना चाहिए कि they are supposed to neutralize the waste before they are mixing it with the water. Tooth decay. दांतों में कैविटी, खाने का शौक हम सबको है, पर ब्रश करना पसंद नहीं, right? Especially the night routine of brushing our teeth, we all try and miss. But what happens because of this? The acidity of the mouth increases. The toothpaste is a base. Toothpaste is a base. जब आपके मुंह पे खाना रहता है और दांतों के कोनों में कहीं कहीं छिप जाता है, then the action of bacteria is making your mouth a little acidic. This acidic nature can even erode the enamel. Enamel is a very strong part of your tooth, right? Enamel is very hard, made of calcium phosphate, right? And it is getting corroded because of the action that bacteria is taking and the acid that is being produced in the mouth. तो क्या करना चाहिए? आप
ठीक से ब्रश करें, आपके टूथपेस्ट में बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देगा इस चीज को. एसिड प्लस बेस will neutralize and your tooth will be smiling as it is, and there will be no tooth decay problem. That's all for today, children. I hope you understood that acid and base and salts are a very easy topics to understand, and you should get your base right, because these are what will help, these basic concepts will help you understand chapters in future classes very easily. And if you have any problem, please do subscribe and like our channel, and all your problems will be made easy in a minute. Thank you for today. Thank you, children.